On digital platform of learning, we are discussing the term statistics, a numeric term expressed in relationship of aggregative facts, and we are discussing one by one. So today we will discuss the features and media reports where we will have the connectivity कि वो एक्सप्रेस करने से पहले जो डेटा आता है उसे कैसे न्यूज़ रिपोर्ट्स में पब्लिश किया जाता है. लेट्स चेक इट आउट वन बाय वन. Statistics, collection of data, organization of data, then analysis and interpretation of result, and then the final evaluation. It's all the game of numbers. Scholars, once again we have a symbol for statistics. And hereby we are discussing statistics, and this time we were going to discuss its features. Features means उसकी पहचान, identity you can say. Features हमें पता कैसे चलता है that this is statistics. Firstly, your data is in numeric term. Numeric terms है. And this gives you aggregate of facts. कि aggregate यानी total सारे facts है. And then this leads to your third thing, that it has multiple causes. हर फैक्ट का रीजन है, मल्टीपल कॉजेज है, हर फैक्ट का रीजन है. देन इट ब्रिंग्स यू टू द टर्म दैट दे हैव अ रिलेशनशिप, एक दूसरे से रिलेटेड है. देन इट लीड्स टू द फेज which says that it has an identity, and this identity is saying that accuracy. Statistics एक नंबर है, नंबर टर्म है, उसमें सारे फैक्ट्स हैं कि what is the production, why this production have this much cost, all the reasons of cost rise, all the reason of profit, everything marks, and that has multiple causes. फैक्ट्स है, उसके साथ उसकी रीजनिंग है. दैट रीजनिंग ब्रिंग्स द रिलेशनशिप, इंटरडिपेंडेंस ऑफ ईच अदर. लाइक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ऑन स्टैंड स्टिल राइट नाउ. व्हेन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ऑन स्टैंड स्टिल, so no production is taking place. So ultimately you will going to sell out what is the past days production you having. That is aggregative fact that manufacturing sector is on standstill. We will going to sell what are the last year closing stock. That has multiple causes की stand labor भी नहीं workout पे आ रही है, हमारे यहाँ लॉकडाउन अनाउंस्ड है, and wages महंगी हो गई हैं. Then rise in prices of inputs because of short supply due to manufacturing of raw material. That has a relationship, and this relationship generates your accuracy of reasons, results, and then it leads to one phase, and it has to say that it is estimated. This accuracy is going to be estimated. ये estimated है बेटा, कि हमने आइडिया लगाया है. It is not exact number, and this estimation delivers you predetermination कि अगली बार क्या हो सकता है. Predetermined है कि अगर अगला लॉकडाउन अनाउंस होगा तो व्हाट विल बी द कंडीशन. सो वी आर प्लानिंग इन एडवांस. ड्यू टू दिस प्री डिटरमिनेशन ना वी प्री प्लान, एंड दिस प्री प्लान ब्रिंग्स द स्टैटिस्टिक्स मेरिट, एंड दिस स्टैटिस्टिक्स मेरिट इज ऑलवेज बीन, ये एक फॉर्म है, न्यूमेरिक टर्म, एग्रीगेटिव डेटा, देन यू हैव रीजंस, देन यू हैव रिलेशनशिप, इट डिलीवर्स यू एक्यूरेसी, फिर वो एस्टिमेशन है. द थर्ड अंडर दिस थीम, environment and climate change. In September 2019, the Prime Minister has launched the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure with its secretariat in Delhi. This global partnership is the second such initiative, international initiative, after the launch of, as members would recall, after the launch of International Solar Alliance. That was in 2015. This global partnership will help in addressing a number of sustainable development goals, as also the aims of Sendai framework. It will enhance climate change adaptation with a focus on disaster resilient infrastructure. India submitted its nationally determined contribution under the Paris Agreement in 2015
on a best effort basis, keeping in mind the development imperative of our country. Its implementation effectively begins from 1st January 2021. Our commitments as action will be executed in various sectors. Honorable Speaker, sir, I interrupt here only to say this is a very important point because a lot of our commitments which have been given in the Paris Climate Change Conference on best effort basis will start kicking in from 1st January 2021. Our commitments as action will be executed in various sectors by the departments and ministries concerned through a normal budget process. They will do it through the normal budgeting process. There are, however, yet thermal power plants that are old and their carbon emission levels are very high. For such power plants, we propose that utilities running them would be advised to close them if their emission is above the preset norms. The land so vacated can be put to alternative uses. In large cities having population above 1 million, clean air is a matter of concern. I'm sure a lot of our members will be keen to know about what steps are being taken for cities and clean air. The government proposes, Honourable Speaker, to encourage such states that are formulating and implementing plans for ensuring cleaner air in cities above 1 million. Parameters for the incentives would be notified by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change. Allocation for this purpose is 4,400 crores for 2020-2021. After having the address of Finance Minister Mrs. Nirmala Sitharaman in the Parliament House for the government budget. Now let's see on which pillars it stands. It stands on the pillars of assessment of statistics and information delivered and collected. Statistics are aggregate of facts. These are studied in relationship of time, place और frequency. एक ऐसी स्टडी जो इंडिविजुअल सिंगल फिगर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर एक रिलेशनशिप बना दे, ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जो एक दूसरे से रिलेशनशिप में स्टडी हो और लेटर एक एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स हो, सारी समीकरण का इकट्ठा होना, and that can be assessed. So the government collects the information and drafts their policy in fiscal year, and that's a government budget. So that is one example. Another example is related to class. So academic achievement of every student in a particular session with a curriculum activities, with other sports activities, and then we deliver the better result of one overall developed student. So that is called aggregates of facts in statistics. It's studied in relationship to each other. Measurement, variation and comparison are three aspects of statistics. We measure what we have and we measure what distance we have to cover. Then we see the variation, and that variation represents the comparison of past and future, and prevailing market condition is the base ground. So statistics delivers such a great foundation. Statistics compare past and present condition with variation. संस्कृत एक बहुत समृद्ध भाषा है और इसी भाषा का एक शब्द है अक्षय पात्र। भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत में अक्षय पात्र का जिक्र है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक अक्षय पात्र एक ऐसा बर्तन है जिसमें अन्न की आपूर्ति यानी फूड सप्लाई कभी खत्म नहीं होती। भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन नाम की एक संस्था भी है जो मिड डे मील कार्यक्रम के तहत देश में स्कूली बच्चों को खाना सप्लाई करती है। ये संस्था 19 वर्षों से काम कर रही है और आज अक्षय पात्र फाउंडेशन की 300 करोड़वीं थाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद परोसी। आज दिन में जब लखनऊ में प्रियंका गांधी वाड्रा का रोड शो चल रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी वृंदावन में बच्चों को खाना परोस रहे थे। वृंदावन में प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूली बच्चों को आज अपने हाथों से खाना खिलाया। बच्चों के प्रति प्रधानमंत्री के प्रेम और वात्सल्य की अनोखी तस्वीरों को आज पूरे देश ने देखा। प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे सेवा भाव के साथ बच्चों को अपने हाथों से खाना परोसा। प्रधानमंत्री ने
कुछ बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाया और ये तस्वीरें पूरे देश को ये संदेश देती हैं कि बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य देश के अच्छे भविष्य के लिए सबसे जरूरी है। अक्षय पात्र फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुई थी। ये संस्था देश के 12 राज्यों में 17,60,000 स्कूली बच्चों को हर रोज खाना खिलाती है। इस संस्था की तरफ से पहली थाली अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से परोसी गई थी और आज इस संस्था की 300 करोड़वीं थाली प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से परोसी गई। प्रधानमंत्री मोदी आज इस कार्यक्रम में बच्चों से मिलकर एक तरह से खुद भी बच्चे बन गए। आज वो इस कार्यक्रम में थोड़ी देर से पहुंचे, इसलिए उन्होंने हंसी मजाक करते हुए बच्चों से ये पूछा कि आप सब सोच रहे होंगे कि ये कैसा प्रधानमंत्री है जो देर से आया, जिसकी वजह से बच्चों को देर से खाना मिला। बच्चों ने भी पूरे उत्साह के साथ प्रधानमंत्री से बात की। 1:30 बजे देखिए प्रधानमंत्री कैसा है, ऐसा ही है सर। 12 बजे खाना मिला, देर से आया प्रधानमंत्री, आपका खाना नहीं कुछ खा के आए। 1:30 बजे देखिए प्रधानमंत्री कैसा है, ऐसा ही है सर। 12 बजे खाना मिलना चाहिए, देर से आया प्रधानमंत्री, आपका खाना नहीं कुछ खा के आए। गरीबी भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि दूर होने का नाम ही नहीं लेती। 70 साल से लगातार सुन रहे हैं कि गरीबी दूर होगी, गरीबी हटाओ, गरीबी भगाओ, हर पार्टी यही कहती है, लेकिन गरीबी दूर नहीं हो रही। बहुत से बच्चे इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें अपने माँ बाप के साथ रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। इसी समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार की तरफ से व्यापक स्तर पर मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत की गई ताकि माँ बाप को और बच्चों को दोनों को प्रेरणा मिले कि वो स्कूल जाएं और बच्चे पढ़ाई करें। लेकिन एक योजना के रूप में मिड डे मील का इतिहास बहुत पुराना है। वर्ष 1925 में, सोचिए आजादी से भी कितना पहले, वर्ष 1925 में मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मिड डे मील की शुरुआत की थी। आजादी के बाद सबसे पहले वर्ष 1980 में गुजरात, केरल और तमिलनाडु ने भी स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील योजना शुरू की। 15 अगस्त 1995 को पहली बार इस योजना को पूरे देश में लागू करने का संकल्प लिया गया और वर्ष 1995 तक देश के 2400 ब्लॉक्स में मिड डे मील की योजना शुरू हो चुकी थी। 2016 और 17 के आंकड़ों के मुताबिक देश के 25 लाख से भी ज्यादा लोग मिड डे मील के तहत फूड सप्लाई के काम में लगे हुए हैं। मिड डे मील के तहत पूरे देश में 10 करोड़ बच्चों को हर रोज भोजन मिलता है। अगर इन बच्चों को एक अलग देश का नागरिक मान लिया जाए तो वो दुनिया का 15वां सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश होगा। अब आप समझ सकते हैं कि ये योजना कितनी बड़ी है। Statistics are numerically expressed. As previous session of One News report, you have seen midday meal. So midday meal is a government policy. It is very much initiative of government to promote healthy living, better academic session with great students, so they are delivered with security of food and education. But it is numerically expressed on the basis how much every year it is delivered in the terms of midday meal, in expenditure and in the nutrition value. That is numerically expressed. But the quality of food, the honesty, the ability that delivers by it, it is not assigned with the numerical value. But we have to understand in this value of statistics, so we have to take numerical information in consideration. What improvement have been assessed in academics due to midday meal? What is the expenditure and outcome of the midday meal? One, again, for the last 2 months, just to give you reassurance that some of the dates which we had extended for fisheries related activities, because many of them had overseas contracts in getting the brood stock or in getting some of the consignments which were coming from abroad, all the deadline extensions have been honored. The validity for SIPs, sanitary import permits for import of shrimp brood stock, was extended by 3 months. We have also condoned the delay of 1 month in the arrival of brood stock consignments, and for all the quarantine cubicles which were booked, but because of the delays, they were going to have to forfeit the monies that they paid. We allowed rebooking at no extra
or additional charge. All this has been respected, and also the verification of the documents for grant of NOC for quarantining has also been relaxed from 7 days to 3 days. So very many measures which will help shrimp farmers, marine farmers, and also coastal farmers, which were given the kind of extension because of the lockdown, have all been extended duly, and help and assistance have been extended as promised. So I want to underline the fact that registration of 242 registered shrimp hatcheries and also rearing hatcheries were expiring on 31st March. They have been extended by another 3 months without any additional burden on them. So such operations also of the marine capture fisheries and aquaculture have also been relaxed to cover inland fisheries and hatcheries. पिछले 2 महीनों में 242 नई श्रिम्प हैचरीज को रजिस्ट्रेशन दी गई और जो रियरिंग हैचरीज जिनकी एक्सपायरी 31 मार्च को हो रही थी उसको 3 महीने की एक्सटेंशन दे दी गई है और बाकी ऑपरेशंस भी मरीन कैप्चरिंग के लिए जो थे उनको और एक्वाकल्चर के लिए जो रिलैक्सेशन देनी थी वो भी दी गई और जो 4 घोषणाएं हमने इनको लेकर पहले की थी उनको भी लागू कर दिया गया है मत्स्य पालन को लेकर. I go to today's announcements, the third tranche covering agriculture. First 8 steps are towards monies going for infrastructure capacity building. And from among the 8, so the first one is we provide 1 lakh crore for aggregators, FPOs, primary agriculture cooperative societies, farmer producer organizations which I mentioned, FPOs, all for strengthening the farm gate infrastructure. Farm gate infrastructure are cold chains, post-harvest management infrastructure, storage centers, yards from where they have to do it. So this fund for 1 lakh crore is being created. Here private entrepreneurs, agricultural entrepreneurs, startups, all of whom are now looking at facilitating by procuring from the farmers and reaching out with value addition to the global markets, don't have the infrastructure. So this fund for 1 lakh crore will immediately address that issue, and that fund will be created at the earliest. In statistics, every aspect have been related to each other because it has a comparison. As pandemic COVID-19 marks the brilliant phase of farmers' development and rural connectivity, and hereby in previous session of media report sharing, I have shared the address of Self-Reliant India's compensation trench announcement for farmers. So compare and correlated each other, compensation and the aid delivered. It will lose value if you will not going to correlate it. If you will going to deliver compensation, so you have to relate it with the infrastructure upliftment. So there is relationship between expenditure and infrastructure. So data can be compared if it is related to each other and prevailing conditions. Prevailing in statistics, each aspect is brought into consideration as aggregate of facts is first feature of statistics. It relates time, circumstances, and place with each other, which is correlated to each other, numerically expressed with the experience of everything. It delivers you a backdrop on the basis of past and delivers you better present and more developed future. Every aspect has to be assessed before taking into consideration of a policy. Collection of information based on numerical terms and later delivers a better policy implementation. Hard fact is that the statistics misses the qualitative information because it matters with the quantitative. So hereby saying thank you for